नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष इनसाइट 29 विद अशोक व्यास कार्यक्रम में, जिसमें हम प्यार की बात करने वाले हैं। और प्यार के साथ मुस्कान तो अपने आप आ ही जाती है और मुस्कुराहट को बढ़ाने में कभी-कभी इस तरह के गीत हमारी मदद करते हैं, जो हमारे लबों तक मुस्कान को आमंत्रित करते हैं, जिसमें छुपा लो यूँ दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की गाना हो, या फिर ये गाना हो कि प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, मेरे हालात की आंधी में झुलस जाओगी। प्यार की बहुत वाइड रेंज होती है, पर टेक्नोलॉजी इस रेंज में क्या असर कर रही है उसके बारे में और प्यार के अलग-अलग रंगों के बारे में बात करने के लिए हमने एक ऐसे व्यक्तित्व को आज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, जो मन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और मन में कहाँ प्यार का सागर है वहाँ तक ले जाने में वो स्वयं भी सफल रहे हैं, औरों को भी मदद करते हैं। हमारे अनिकेत गुने जी आज जुड़ रहे हैं। अनिकेत जी स्वागत है आपका, नमस्ते। तो Namaste, Ashok ji. It's और lovely ये being जो here with you. एप्रिशिएट दैट एंड लेट मी बिगिन by requesting you on the eve or on the occasion of Valentine Day, if you look within और आप कोशिश करें प्यार से आप क्या अर्थ लेते हैं? प्यार से आप क्या? अर्थ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव फॉर यू? Yes, Ashok ji. Gurudev Shri Shri Ravi Shankar talks about love not being an emotion, but the very core of your existence. And love, pyar, prem is, I feel, the biggest mystery in life. But it's also so simple, it's so tangible. And I can't think about love, right? Love is when you see a baby gurgle and laugh. And Mm-hmm. love is when you see your grandmother after a long time. Love is when you are able to make your partner feel completely at home, comfortable, at ease in their own skin. And you get a peak of love in those instances. But what is so mysterious is that this love is hiding in the whole creation and we don't even recognize it. So today I was thinking in the morning, I was talking to a few friends of ours, and we were just talking about like the mystery of love and how it hides, but when it peaks, it's obvious. But when it doesn't, actually, life doesn't remain as juicy as before, right? Or as juicy as it is. So I feel love is the biggest mystery, but I think Gurudev has kind of given a hint that actually it's not an emotion, it is your very existence. So, in some ways, love is that North Star that points towards truly who we are. So, I Okay, feel, so let me interrupt you here, and you refer to Gurudev. So we'll go back to Gurudev, but before that, let's look at the way it is promoted and the way people are made to perceive love. The way we are celebrating Valentine Day, I mean, you feel if you are in that age group, तो आपको लगता है कि यार कुछ कार्ड तो खरीद के उसको देना ही है, कुछ गिफ्ट तो देना ही है, and so what I'm thinking loudly with you is many times it is the external expression of your commitment or your dedication towards an individual, whether you are a boy or a girl, वो जैसे भी आपको लगता है, तो ये जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ क्या जो इंटरनल एक्सपीरियंस ऑफ लव है, ये दोनों डू दे गो हैंड इन हैंड, लेट अस पुट इट दिस वे? yeah, Ashokji, when they go hand in hand, there's resonance that happens, right? But when they don't go hand in hand, when there's an outward action that is not in frequency with what the internal feeling is, there it doesn't land the same way. That action doesn't land the same way. Uh, so many people greet us. There could be people at the counter, right? They'll say, "Have a good day," but it doesn't have the same impact as somebody when your loved one says it, right? Or
my if my niece and nephew give me a even like a small token saying, Mama, this is for you, the way I receive it is much differently. I mean, I actually a week back, a friend's son and daughter, they gave me like different pairs of socks. They were happy socks, and they were so happy that when I looked at them, I knew the love with which they picked out the socks, and they were trying to express through those socks. And so the outer action is related to the inner feeling, but in a lot of times, the stress that we carry as adults kind of misaligns what we feel inside and what we do outside. So here, let us go to a few of the layers related to love. And when I am talking about the kind of love related to Valentine Day, then there is a relationship that we are talking about, relationship with the other person. Yes. But that necessarily brings into the picture your relationship with yourself. So Yes. many times we are so much insecure in ourselves. तो हम स्टार्टिंग की जो इनिशियल स्टेप्स होती है ना, अनिकेत जी, मे बी आप भी कुछ शेयर कर सकते हैं इफ यू केयर टू, when you feel that this is the one as a boy or a girl, और उसको एक्सप्रेस करना है, तो उसको कम्युनिकेट करने में कई लोग सेकंड लगाते हैं, कई लोग बरस लगाते हैं, कई लोग पूरे जन्म एक्सप्रेस नहीं कर पाते. So talk to me about that stage where you feel for somebody and you want to express. तो क्या करना चाहिए? Yes. It's so. I mean, it's so. In a way, again, there's this contradiction already in it, right? It's so easy to experience and feel love, but it's so hard to express it. And I mean, when people first meet, right, there is chemistry, and then sometimes that chemistry takes mysterious turns so that it blossoms into something more. Sometimes it withers away with circumstances. It's so subjective and it's so individual, these experiences. Even in our own life, we've behaved in different manners at different points of time in our life, right? At some point, you could easily express. At some point, the expression really didn't land the way it's supposed to. At some times, I didn't express at all. So, I mean, I don't know if there is like a secret formula, right? You do this and then this happens, and this is how you express, and the best thing will happen. That's why it's art of living. It's not the science of living. It's truly an art, and it's just a wonder. You can wonder about it, right? Like, oh, how did I meet this person, and how are we now living together for the last 11 years? Like, wow, I had never imagined that. So I don't know. I just feel like love is one of those big mysteries of life, right? And what love brings in our life and who comes in our life is like such a big mystery. सो मिस्ट्री को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आपके साथ में. एंड गोइंग बैक टू द Ashok मोमेंट ji, वेयर यू actually, I had डिसाइड. a question आपके लिए. Like you've been in such a loving, nurturing, supporting relationship over the years, and you've seen so many evolutions of social interactions, technology, society. Can you talk a little bit in terms of like how the early days were when you met your partner, right? And over a period of years and decades, I don't want to age you, but over the period of time, how has that shifted with the shifting landscape of the society today we live in? एक्चुअली आपने ये कहते हैं वो टेबल टर्न कर दिया है. बट द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई टॉक इन जनरल, और थोड़ा बहुत मेरा अपना पर्सनल भी लाऊंगा. हाँ. पर्सनल मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि आई एम वन ऑफ दोज हु यूज्ड टू लव राइटिंग लेटर्स. तो अब धीरे-धीरे ऐसा हो गया कि आप चिट्ठी लिखते भी कम हैं, पढ़ते भी नहीं लोग, क्योंकि कम्युनिकेशन हैज़ reduced that space where you would think about the person. आप लिख रहे हैं, और जो पहले तरह-तरह के लेटर हेड्स भी आते थे, और खास करके वैलेंटाइन डे के दिन मुझे याद आता है, वो मतलब बहुत ही मस्त होते थे. I used to love writing letters even Mhm. before I was engaged. तो मैं लेटर राइटिंग में ठीक था. एंड Lovely. let me take this opportunity of sharing. क्या होता था कि
कुछ लोगों को लिखने में तब भी मजा नहीं आता था, पर उनको लगता था नहीं लिखना चाहिए। सो मेरी एक बुआ थी जिनके साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशन था और एज में बहुत गैप नहीं था। तो व्हेन शी गॉट एंगेज तो उसने कहा तू मेरे लिए लिख दे। और मैं तो पोएट था, मैं 10th में पढ़ता था, लेकिन मैंने उसके बहुत सारे लव लेटर्स लिखे थे उन दिनों में। तो मुझे इस बात को कह के ऐसा लगता है कि जो इमेजिनेशन के साथ उड़ान भरने का जो अवसर टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा हस्तक्षेप अ, होने के पहले था, वो अभी कम हो गया। और Hmm. दूसरा क्या, हम लोग कंज्यूमर हो गए इवन Hmm. एक्सप्रेशंस के भी। तो हमारे खुद के एक्सप्रेशन के लिए हम अपने आप को समय नहीं देते, और Hmm. पता चला वो व्हाट्सएप में आ रहा है, यहाँ से वहां भेज दिया। इस बात को लेकर मैं अपनी दो पंक्तियां आपको सुनाता हूँ ऐसे। Yes. कहता है कि प्रेम पत्र लिखकर वो कमाल करते हैं, प्रेम पत्र लिखकर वो कमाल करते हैं, अच्छा लिख जाए तो कॉपी टू ऑल करते हैं। उसको भेज दिया। तो So so true. yeah. So I think coming back to your question, and I'll seek your input also on this. This technology is reshaping the way we feel, the Hmm. way we connect with ourselves, and also the way we connect with others. And I Hmm. think I might be biased on this, but I feel we are less कनेक्टेड टू आवरसेल्व्स ड्यू टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारा एक्सट्रोवर्ट जो है ना, बाहर जाने का जो है वो इतना Hmm. इजी हो गया है। और माइंड को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो क्या है कि चलो व्हाट्सएप में बैठ गए, फेसबुक में बैठ गए, यूट्यूब से ये आ गया उसमें चले गए। सो अगेन इससे क्या हो गया कि आपको किसी के बारे में परवाह करने का वक्त भी कम हो गया। और पहले Hmm. लोग वर्षों तक सोचते रहते, अरे तू नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। वो कहता चलो जाने दो यार, दूसरी को, है ना। एक वो स्कूल के दिनों में कहते थे तू नहीं और सही, और नहीं और सही, तो वो तो इंस्टेंटली अवेलेबल होगी। और ऐसे पता है, नहीं ऐसे हो. डेटिंग एप्स भी है, उसमें से भी चले जाते हैं। तो हाँ. एनीवे, हम चूंकि बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हैं एक साथ। आप मेरी बात पूछ रहे थे, तो पर्सनली स्पीकिंग आई थिंक if you are not willing to have a sense of egolessness, a Hmm. sense of sacrifice, Hmm. तो सस्टेन करना बहुत मुश्किल था रिलेशंस को। क्योंकि Yes. माई वे और हाईवे करने से तो कोई संबंध आगे तक चलता नहीं है। इसके बारे में आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं, बट ये तो आगे की स्टेज आ गई। लेट अस लेट अस एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लव। आई थिंक व्हेन यू आर इन लव and you just think about that person, whether you are a boy or girl, Hmm. it gives you a sense of high and a sense of intense relationship with life itself. आप Yes. इसके बारे में बताइए जी। So very lovely. Because when we are in love, everything is heightened. The grass is greener, the sun is shining more. You can shirk off and you can basically bounce off anything that is coming your way. You're so one pointed, so focused. Like the divided mind that you just talked about is all consolidated, all fully whole and there. It's such a lovely feeling because I think you said it, Ashokji. Life is love. So the moment we are deeply plugged into love, we are connected to life. And you're so right. Technology and all the distractions, media in the world today has diluted that intensity of connecting to life itself. And when we say connecting to life, it's connecting to ourselves, right? It's connecting to something deep within us that is enlivening us, that is keeping us alive. So it's a really interesting observation. So now let us let us look at the joy which are unfolded by being in love in one's life. जैसे कहते हैं अभी वो अपने आप को भूल जाना, अपने आप को भूल जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है। Yes, क्योंकि हम अपना वजन लेके चलते रहते हैं, तो प्यार क्या है कि आपको वो पंख दे देता है जहां आप कुछ के कुछ हो जाते हैं। तो absolutely. तो आप बताइए कुछ ऐसा आपके जीवन में हुआ है जहां आपको लगा कि किसी अनुभव को नए ढंग से छूने की, पहचानने की आंख आपको
प्यार की कृपा से कह दें मिलियो। और मैं यहाँ पे प्यार को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, एक हाँ, मनुष्य का प्यार भी, लेकिन और जो प्यार जिसकी कोई सीमा नहीं है। how lovely. Uh, I mean, there's so much to unpack over here, Ashok ji, right? Like we live with our partners in life who become the mirrors of our own life. So the role of love in every relationship where it's expressing is truly to reveal to you that maybe there's something inside of you that is actually reflecting back that love, and also giving you a clearer picture of how you can experience the totality of love yourself. And in relationships, especially in marriages or in live in relationships or in dating relationships, this becomes very apparent, right? Small things get amplified because we are living so closely together. With COVID, we've been in the same house for such a long time, right? So there is no separation in some ways. Like life has become one. And I think when you're living with somebody who you love so much, like their life becomes your life. And then how do you create a little bit of that separation so you know exactly what's going on with you, what's going on with them, and you're able to actually help both in the relationship. And I just feel in some ways love is the ultimate teacher and it's the ultimate destination. What is cool about it is it's always here and now. It's always in front of the person. It's always in there in the person in front of you. So I mean the benefits and the lessons and the experiences of love are boundless, Ashokji, as you're saying. And I think in your question you hinted it, right? There was a poem I read when somebody had sent over the New Year's. They talked about how the divine is loving us and expressing love through the fragrance in the flower, and is expressing love through the smallness in the mosquito, and is expressing love through the sweetness in the sugar, but it's hiding behind all of that. And the true experience of love and journey of love is to discover that unseen divinity that is actually filled with love to its core. So I mean, this is an endless topic, endless journey, endless तो मैं आपको एक नज़्म सुनाता हूँ, शीनकाब निज़ाम साहब की है, वो प्यार के बारे में, जैसे मुझे याद है। हाँ, तो वो जो हम बात कर रहे थे ना, देयर इज़ अ सेंस ऑफ एवर ग्रोइंग, जैसे कि आकाशगंगा के बारे में हम कहते हैं कि इट्स कंटीन्यूअसली एक्सपैंडिंग, उस तरह से yes, प्यार जो है, उसके बढ़ने की बात इस नज़्म में आती है। आप देखें कि जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए तुमसे बिछुड़े, ज़ख्मों के जंगल पर लेकिन आज अभी तक हरियाली है। oh, मैंने बहुत सारे स्किप कर दिए इसके, तो वापस लेता हूँ थोड़ा-सा। हाँ, जाने कितने लम्हे बीते, जाने कितने साल हुए तुमसे बिछड़े, जाने क्या-क्या सोचा मैंने, खोया मैंने, पाया मैंने, जाने कितने समझौतों के दाग लगे हैं रूह पे मेरी। अ, तुमने अगेन आई एम मिसिंग समथिंग बट आई एम कमिंग टू द कंक्लूडिंग पार्ट। yes, तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चाँद सा ही होता है। how इस बात lovely. को कहने के लिए मैं ये नज़्म याद कर रहा था। तुमने ठीक कहा था उस दिन, प्यार चाँद सा ही होता है और नहीं बढ़ने पाता, तो खुद ही धीरे-धीरे खुद ही घटने लग जाता है। Ah, lovely, तो beautiful. क्या है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जिनके साथ भी हम प्यार का संबंध रखते हैं, वो ऐसी ही होती है कि हम उसमें कुछ न कुछ नया देखते रहते हैं। और It's अगर beautiful. हम अपने आप को बंद कर देते हैं, उसमें नया देखना छूट जाता है, तो स्टैग्नेशन आ जाता है। तो प्यार Beautiful, नहीं बढ़ Ashok. सो And I mean, जो आप बोल रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ, सबकॉन्शियसली सब करते हैं ना. It's we demand love. We demand attention, we demand appreciation. Subconsciously we demand love. And आप जो बोल रहे हो वो इतना सत्य वचन है, क्योंकि तब प्यार घटने लगता है. But if you are in wonder, if you are in adoration, if you are in honor, if you are in acceptance, that love only has to grow, it has to multiply. So these are some of the big lessons and some of the big learnings that I'm personally experiencing, right? Like we are all work in progress.
ki how our own mind either comes in the way of experiencing that love and actually diminishing that love, but how our own perspective can actually multiply it and amplify it. So it's I'm in just wonder of the journey today, Ashok ji. It's a तो very relevant topic. अनिकेत जी, ये जो एक इंटेग्रिटी की बात होती है ना कि अ, मतलब यही है, जैसे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने गई, वो तो खैर एकदम अलग स्तर की बात आ गई, लेकिन फिर भी जो एक सेंस ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स योर लाइफ पार्टनर और समवन हु यू कंसीडर यू आर कमिटेड टू, उसको बनाए रखने के लिए एक तो पेशेंस खुद के Yes, साथ भी, और तो yes. मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको, फिर आपकी बात की तरफ जाना How चाहूंगा। lovely. Yes. कहता है कि ये मेरा लिखा हुआ है कि Huh. क्यों सभी के पास जाकर देखना, क्यों सभी के पास जाकर देखना, अरे जो मिला उससे बनाकर देखना। Wow, 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 wow. देखो ना, very हाँ, nice. तो जो मिला उससे बनाकर देखने के लिए ऐसा होता है कि आपके पास दिल बड़ा होना चाहिए और Yes, धैर्य भी होना चाहिए। तो ये सारी टेक्नोलॉजी के युग में जो बेसिक लव को सस्टेन करने वाली क्वालिटीज हैं, उनको नर्चर करना और ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है। क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में? Ashok ji, actually, I'm in the perspective of right now. I'm so grateful to technology. Uh, my my better half has gone to India, so I'm just so grateful. I can hear her voice, I can see her, and thanks to technology, thanks to WhatsApp, thanks to FaceTime, I'm able to be in touch with my loved ones. Right back in the day, I might have to do a trunk call, and maybe after 5 days hear the voice. There's a different charm in that. But I feel today, in this moment, I feel really grateful to technology that I can stay in touch with my loved ones who are seven seas apart, be it my mother, my parents, my in laws, my niece, nephew. So I am grateful to technology, but you're 100% right. Technology misused has the ability to actually isolate us and make us feel smaller. Oh, this other person has so much love in their life, they have so much comfort. And now it's interesting, somebody said a few days back to me, in the olden days we used to compare ourselves with our neighbor, right? वही दिख रहे हैं, उनकी गाड़ी दिख रही है, उनका घर दिख रहा है, मकान दिख रहा है. But now we are comparing ourselves to the whole world because the whole world is in front of us now. सही There बात है। is no end to it. Hana, there will अच्छा, be तो somebody who is better off. There'll be somebody who's more loved. There'll be somebody who's more popular. It's अच्छा, never तो going to be enough. अब आपकी बात से एक तो मैं ये बधाई देना चाहूँगा हमको कि आपने टेक्नोलॉजी का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनिंग लव, उसके बारे में आपने बताया। और जो आपने दूसरी बात कही है, उससे क्या हो गया है कि कई बार हम अब कहीं घूमने जाते हैं, तो उस जगह के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, हम अपने लिए अनुभव नहीं जोड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे होते हैं कि फ़ोटो खींचते हैं कि फेसबुक पे लगानी है, और फिर ये भी देख रहे होते हैं कि कितने लाइक आए। जबकि आप एक झील के किनारे हो, पहाड़ के पास में हो, उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। बिल्कुल. तो ये जाता भी होगा, आई मीन दैट ऑप्शन हैज़ आल्सो बिकम लाइक एन इंट्रूडर नाउ इन आवर लाइव्स। तो समय ऐसा है कि फास्ट चला जाता है, इसलिए मैं 2 बातें आपसे और करना चाहता हूँ। हाँ, आपने पहले लिव इन रिलेशन के बारे में भी कहा था, हाँ, तो हाँ. एक जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है और जो प्रेम है, इन इन दोनों का जो एक कंफ्यूज सा स्टेट आ गया। वो कहते भाई प्यार है तो शादी क्यों करनी, और कहते शादी होगी तो प्यार होगा, जरूरी नहीं होगा। और दोनों लॉजिक आर्ग्यूमेंट अपनी अपनी जगह ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? Ashok ji, it's something that I mean, I personally went through. Uh, I've been on both sides of the debate, but I think looking back, and again, I'm generalizing, right? Uh, in some ways, when something is open ended, when something is not necessarily uh, uh, closed in from a commitment perspective, there might be a little bit of gap of insecurity, right? So a live in, of course, you might be fully committed as much as you might be in a marriage. But at the same time, because of the context of that relationship, because of the maybe the social pressures that you might be facing,
because of that, there could be an iota of insecurity, right? And in some ways, marriage doesn't guarantee any of it, right? Like even if you sign paper, even if you go around the fire, nothing is guaranteed. But in some ways, I've come to the opinion, and it could change, is that sacredness when I had about going through that ceremony and bringing my whole family and making a part of that ceremony, there was something very sacred about it. And in my eyes, I remember in that moment distinctly, the relationship itself elevated to a new level that I hadn't really anticipated. uh, so I do believe in society there is value for sacredness and for honor and for bringing the whole, your loved and dear ones, into your lives. So I've kind of done a little bit of a change in how I see those aspects. So, so here is one more question, and probably we'll conclude very soon. Yes. रिलेशनशिप्स में, और स्पेशली जो वैलेंटाइन डे को लेते हुए, हम चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप बात कर रहे हो या फिर फॉर्मली मैरिड कपल की बात कर रहे हो, in last few decades, one change that we have observed in society, whether you are in India or America or probably elsewhere, women have their more say in not just the affairs of home वगैरह, or because most of them are now in the working space also, तो एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बढ़ गया हो या मोर assertive हो गई हो ऐसा, and that many times people feel causes a kind of equilibrium or a equation जहाँ पे वो दोनों हैंडल नहीं कर पाते. जो लड़का है उसको लगता है नहीं यार ये ऐसे कैसे बोल गई, और उसको लगता है नहीं ये ऐसे क्यों नहीं करा. सो जस्ट ब्रीफली योर टेक ऑन दैट. I think briefly, since the olden days, right, the Devi was always the single source of strength, Still and is, yes. the feminine energy still is that, right? So it is such a positive development that maybe the older generation who might have felt a little bit more uh, dependent, right, on their male partners, is actually coming and just embodying the power that is already there. I think it's extremely healthy. I think just the fact that there are two individuals who are complete in themselves and are equal in that relationship, I think makes for a very healthy dynamic, rather than somebody being here and somebody being here. Like it's a seesaw now, right? We have to find our equilibrium and kind of have a little वेरी bit of. वेरी वेरी वेल सेड. आपने कहा कि सम पर रहना चाहिए. सम पर बात आ गई तो मैं एक दो पंक्तियों के साथ हमारी बातचीत के समापन की तरफ जाऊं कि प्यार है तो संसार है, प्यार है तो सार है, और प्यार है तो जीवन में बहार है, प्यार Wow. है तो जीवन खुशगवार है. तो सारी बातों का जो सम पर आना है वो प्यार के बिना हो नहीं सकता है, क्योंकि प्यार आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ा देता है, आपकी फॉरगिवनेस को भी बढ़ा देता है, और प्यार से सेलिब्रेशन जो जीवन का है वो होता रहता है. तो जीवन को सीखने में प्यार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. दो पंक्तियां और कहते हुए विराम लेंगे. और जो मैंने मेरे गुरुजी से सुना था हाँ, हाँ. कि हम थोड़ा हंस के सीखे हैं, हम थोड़ा रो के सीखे हैं, पर जो भी सीखे हैं किसी का हो के सीखे हैं. तो Wow. Wow. होने वाली बात है. उसको लेते हुए अनिकेत जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपका भी बहुत सारा आभार है. और वैलेंटाइन डे हैप्पी हैप्पी वैलेंटाइन डे. नमस्ते अशोक व्यास को अनुमति देते.